So namaskar all of you. So आज मैं next हमारा minor criminal laws रा start करिबा. Next statute टा इटा गोटे छोटो statute टा बेसी time लागिबोनी. 3टा class रे we can complete it. Okay. So 18 टा sections एतरे रहउछ. Okay, 18 sections are there. So आज हमें section 1 to 5 देखिबो. But before starting section wise टिके history टा जानिबा. Okay, 1884 the Explosive Act, right? So aim or scope, main objective कौन है act में? So if you can see here, an act to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives. ठीक है? 1884 act. तेणु तार टिके historical perspective आपण देखिबे. Okay, you know that our first war of independence is 1857. ठीक है? तापरे आस्ते आस्ते revolutionary activities बढ़िला. There are a lot of revolutionary organizations जो माने की काम करिबा स्टार्ट कले. बेंगल रे mainly undivided बेंगल रे. Okay, तापरे सेंट्रल पार्ट जोटा सेंट्रल इंडिया जोटा हम कहू. ओके, ताकू सीपी कहउतले सेतबेले मध्य प्रदेश जो पार्ट टाइप पे अछि ताकू सेंट्रल प्रोविंसेस बोली कहउतले. ठीक है? तो कानपुर और से सब जगह वाला कानपुर सेतबेले हमें बे कानपुर कहू सेतबेले ब्रिटिशर्स माने ताकू ना देइतले क्वानपुर, CWANPORE. ठीक है? तो सी आपण कहि परिबे गोटे टाइप रो रेवोल्यूशनरी कैपिटल थिला इंडिया रो. जते सब रेवोल्यूशनरीज थिले तो सेठी सब काम करथले मेनली. तो एक्सप्लोजिव्स तो दरकार. तो एक्सप्लोजिव्स बनेइबा फॉर एनी टाइप ऑफ यूज, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स करिका भी एमाने नै कि ब्रिटिश को अगेंस्ट यूज करथले. ओके, तो तापरे से माने डिसाइड कले कि नहीं गोटे रेगुलेट करिया पे पड़िबो. जी ना इच्छा सी एक्सप्लोजिव गोटे बने दबो सेटा हम पे असुविधा. सो इट इज अ कॉलोनियल एक्ट. ओके, जो थर गोटे एम थिला, वन ऑफ द एम्स, नॉट द ओनली एम बट वन ऑफ द एम्स वाज कि जो रेवोल्यूशनरीज को हाथ रे गुडा न पड़ू कि केते कम पड़ू. ओके, तो सेथरे कोन से ब्रिटिश रेगुलेट करिया पे जाउतिले मैन्युफैक्चर, पोजेशन किए रखी पारिबो, यूज, सेल. ओके, एतिकी में लिखला एटा पर ऐड है ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स. ओके, सो एटा तारो मेन ऑब्जेक्टिव आपण कहि पारिबो. So whereas it is expedient to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives, it is hereby enacted as follows. तापर आपनकर section started. The short title act may be called the Explosive Act 1884 and local extent subsection 2 रे कहूची it extends to whole of India. So footnote देखंतु 3 और 4 टा. ओके, एरा प्रथम फुटनोट्स रा भी पढ़ी देबे आपन को टिके भी बुझिया पे सेटा सहज हबो. ठीक अछि. तो एटा जो एक्ट 4 ऑफ 1884 कहला तार फुटनोट टा देखंतु. तो एटा हला कोन वर्जिन पीडीएफ टा. वर्जिन पीडीएफ माने विदाउट कमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स सीधा आपण इंडिया कोड रो साइट रो डाउनलोड करबे. एथरे भी बहुत गुड जिंस आपन को मिलि छिबो. तो प्रथमे कोन कहूची देखंतु. दिस एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 3A ऑफ द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874. तो सीतार सब डिटेल्स करिका देछि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया रो. ओके, द ब्रिटिश टाइम रे कोन कोन सोडा हेतला. ओके, को जगह को इनिशियली एटा एक्सटेंड करिथिला. ओके, सो टू बी इन फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग, ओके, एंड रांची जोडा कि सेतबेले ओके लोहर जगह ताकू कह जाउतला. राइट, आउ एटा बाहर थिला कोथरे Calcutta Gazette, because you know there were 3 presidential towns,
Calcutta थिला Madras थिला Bombay थिला तेणु जेमती एबे हमर बाहरची गैजेट ऑफ ओडिशा ओके कि गैजेट ऑफ इंडिया सेमती Calcutta प्रेसिडेंसी रो Calcutta गैजेट बाहरतला ठीक अछि तापर आउ को जगह तो एगुडा एते इंपोर्टेंट नो किछि ओके हम ठीक अछि बट से तार हिस्ट्रीटा दैछि को केबे केबे को जगह रे से गुडा एप्लीकेबल हैछि so that you can go through okay so extends to whole of India so seta apanakara okay the words and letters except part B states omitted by Act 3 of 1951 constitution रे आपण पढिबे तो हमर एपीपी रे constitution नाही तो ओजेस करिके पई कि जनरली अलगा को करिके पई constitution रे आपण पढिबे किसी जो डिवीजन ऑफ द स्टेट्स करिका थिला सेगुडा आपणकर आगुरु एमती थिला कि ग्रुप ए स्टेट बी स्टेट ग्रुप बी स्टेट्स ग्रुप सी स्टेट्स और ग्रुप बी स्टेट्स ठीक है तो एमती माने कोन ना स्टेट को सेमती कैटेगराइज करा होतला ठीक है तो ब्रिटिश प्रोविंसेस गोटे रे रहि गला प्रिंसली स्टेट्स गोटे रे रहि गला हाई कमिश्नर करो यू नो ताको कंट्रोल रे जोडा अछि सेगुडा गोटे रे रहि गला ठीक है तो एई टाइप रो थिला सेटा दैट इज व्हाई सेटा ग्रुप बी स्टेट लिखि ओके केना आगुरु सेमती थिला सब स्टेट्स इक्वल नथिले परे जाईकी आफ्टर मच आफ्टर इंडिपेंडेंस आमे ऑल स्टेट्स को इक्वल कल एमिति भी सिचुएशन थिला जेमती यू नो अबाउट सिक्किम सिक्किम जतो इंडिया रे जॉइन करथिला प्रथमे सेटा गोटे फुल फ्लेजेड स्टेट नथिला ताको हमें कोन कहलु इट वाज सेड टू बी एन एसोसिएट स्टेट ठीक अछि त तार भी बहुत बड़ा हिस्ट्री गोटे अछि राइट सिक्किम रो कोन ना सिक्किम रो पाखा बाकी जो सब स्टेट उडा थिले नॉर्थ ईस्ट अलगा स्टेट से माने इंडिया रे जॉइन करि गले आगुरु सिक्किम रो जो राजा थिले ओके वो तो चोग्याल इज नॉट द नेम ऑफ ए पर्सन सेटा गोटे डायनास्टी रो गोटे ना आपण कहि परिबे कि जो हेरिडिटरी टाइटल से हिसाब रे तकर नाटा थिला चोग्याल से चोग्याल राजा जे थिले ताको कहया कथा कि ना पावर टा मो हाथ रे मु रखी मु कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू नो सिक्किम को मिसे देबी बट ताको लोक माने देखिले कि पाखा पाखी जो राज्य गुड़ा अछि सेगुड़ा इंडिया रे जॉइन करिकि ताकर डेवलपमेंट भल रहउची सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग तो गोटे पॉपुलर डिमांड आसिला कि चोगियल को हटाओ ओके आमे इंडिया रे जॉइन करिबो सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताको एक्सेप्ट करले किंतु सीधे ताको स्टेट करे देलेन प्रथमे ताको एसोसिएट स्टेट हिसाब रे रखाला किछि वर्ष परे तापर स्टेटहुड मिलला तापर से स्कीम टा ही एबोलिश हो गला ग्रुप बी ए स्टेट ग्रुप बी स्टेट ग्रुप सी स्टेट ग्रुप बी स्टेट किछि नहीं ऑल स्टेट सबू ओके इक्वल से छोटिया राज्यटा ही तो कि बहुत बड़ राज्य है कुछ पहले तो सेटा से कहूची लोकल एक्सटेंड है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सप्लोसिव एक्ट नाउ यू कम टू योर मटेरियल एटा सेक्शन 1 to 5 अछि आफ्टर द क्लास आपन को मिल जिवो आपन को ऐप रे ओके सो legislative posture of section 1 section 1 ro importance for okay so short title and extent are not merely formalities they tell courts regulators and licensees what law to cite and where it applies the act is explosive act 1884 the word indian was later omitted so indian explosive act thila okay and it extends to whole of India, ensuring uniform application in all states and union territories. Okay, explosive act. किए बने परिवो explosive, किए ताको sell करी परिवो, किए ताको store करी परिवो, किए ताको import करी परिवो, किए ताको export करी परिवो, किए ताको transport करी परिवो. इतनी कथा. Okay, so this act deals with all these things. Right. Commencement of the act was notified separately. Official compilation records the date as 1st July 1887 सेटा हमें एटू पाई जिबा फुटनोट फर्स्ट पेज रे सेठी सो पॉइंट नंबर 5 टा देखन तो 1st जुलाई 1887 ठीक है तो एटा हमर तो एटा मेंस रे पडियो ना तेनो एटा प्रीलिम्स भलिया मन रखिया दरकार ने डेट ऑफ कमेंसमेंट कोन है ना ओके रे मेन कोन मन रहबार अछि जोटा हमें आगु को देखिबा कि से जो मैन्युफैक्चरर अछि तार रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोन अछि
ओके से टाइप रो जिंस आपनको क्वेश्चंस पड़ी पर ओके सो 1st जुलाई 1887 रे एटा दिस केम टू फोर्स ओके the opening recital was modernized to include export in addition to transport and import so eta add karala pare and the word Indian was dropped from the title by later amendments so eta Indian Explosive Act kuauni kebala Explosive Act kuauchi okay joda ki 1983 amendments re okay Indian ta hata gala the extent clause means that act applies throughout India including union territories created or recognized from time to time so licensing and control are uniform nationwide ହେଲା ତା ମାନେ କଣ suppose ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପର୍ପସ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଡାଇନାମାଇଟ୍ସ ବନଉଛୁ କଣ ମାଇନିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ ହବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ ହବ ଓକେ डिफरेंट जो ओर्स फोर्स ପାଇଁ ठीक ଅଛି ତ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ କାହାକୁ ଦେଇହବ ठीक ଅଛି so licensing and control are uniform nationwide the official text footnote also cross refers the allied penal statute the explosive substance act जोटा भी अछि हमर सिलेबस रे आ पर सेटा पढिबा explosive substance act 1908 for criminal misuse okay distinguishing this act's primarily regulatory character very very important okay जदि गोटे क्वेश्चन आपनकर आसिला कि दीटा जिंस काई कि थियाला हमर इफ यू सी द नोटिफिकेशन हम सिलेबस जदि हमें देखिबा ओके तो एतरे एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 दियाला आ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 दियाला ठीक है दीटा काई दिया सो एई जो पॉइंट लिखा हैला कीप दैट इन माइंड कि एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 टा मेनली एतरे पिनल प्रोविजंस किछि नाही एटा मेनली रेगुलेटरी इन कैरेक्टर ये रेगुलेट करूची आपनकर किए मैन्युफैक्चर करिवो ओके किए सेल करिवो के इंपोर्ट करिवो के एक्सपोर्ट करिवो के ट्रांसपोर्ट करिवो के स्टोर करिवो ओके एक्सप्लोसिव्स को बट the other act that is the explosive substances act 1908 सेथरे पिनल प्रोविजंस करिका अछि यदि आपण क्रिमिनल मिसयूज कले आपण इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव नहीं कि आपण कोठी गोटे घर कार उडे देले कि गोटे लोकन को ऊपर सेटा यूज कर देले कॉमन लोकन को ऊपर ओके क्रिमिनल मिसयूज सेटा आपण पढिबे एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 एटा परे हमें देखियो ओके yes anyone wants to ask anything you can ask no okay so let us continue then scheme connected to section 1 that is how the act operates because it extends to whole of India तेणु सेटा आपनकर सुविधा होची सेतरे कोन ना आपण all over India okay uniformly सेटा implement करि परछन so central rule making under section 5 is the backbone of uniform control okay तो तारा उसकी जो state variations generally रहूनी implemented nationwide through explosive rules 2008 okay these rules define categories of explosives lay down storage distances licensing forms cancellation powers and safety and security duties okay rules गुड़ा जोड़ा 2008 रे आउथरे amend हेच okay special subject rules include तो यही
एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 को जदि आमे धरिबा आउरी बहुत गुडे रूल्स आउ एक्ट्स आठू एमिनेट करिछि माने एउठू ही बाहरिछि ता भितरु अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 सी अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली गोटे इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल बहुत प्रकार जिनस रे डिटर्जेंट ये से बहुत जगह रे यूज हुए अमोनियम नाइट्रेट हैला किंतु अमोनियम नाइट्रेट ता बॉम्ब रे भी यूज हुए ठीक अछि तो आउ वन ऑफ द कॉमन you know chemicals which are used by these naxalites and others blast କରିବା ପାଇଁ ठीक अछि तो सेटा तो दिस अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 भी आपनकर तारी अंडर रे ओके ता अंडर नो सेव टू डिराइव हिच एगुडा ऑब्वियसली हमको मिलिबनी इन द बेयर एक्ट एटा आपण जदि टेक्स्ट बुक टा पढिबे ताले तो एटा जो सोर्स रहउची आपनकर सेटा हला आपनकर माइनर क्रिमिनल लॉज ओके तो सेथरे गोटे तार गोटे एडिशन 17टा बही अछि सेथरे ठीक अछि तो सेटा आपनकर जो पब्लिकेशंस रहउची ओके लेक्सिस नेक्सिस रो तो सेथरे 17टा वर्ष तो सेटा कोन चैम्बर रे रखिया पे सुविधा ठीक अछि तो मु कहबिनी आपण केन दियंतो का सेटा तो मो पाखरे अछि मु सेटा रेफर करूची आपण को इंपोर्टेंट जिंसटा त भितरु कहि देबी सेई थरे आपणकर एमती बहुत गुडे रूल्स करिका अछि जो गुडा रिलेटेड टू दिस 1884 एक्ट एंड based on that these special rules have been made तो ता भितर ammonium nitrate rules 2012 गोटे okay ammonium nitrate was expressly deemed an explosive under a 2011 notification जेतले टेररिस्ट गुडा ताको यूज करिया स्टार्ट कले and its manufacture possession transport sale import and export are licensable across India under the 2012 rules okay licensing authorities are structured uniformly तो जमती एक्साइज एक्ट रे हमें देखथिलु से कलेक्टर ही रहबे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव जमती हमारा ड्रग्स कंट्रोलर हमें देखिथिलु कोतरे जोटा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रे ठीक अछि एंड चीफ कंट्रोलर जो माने they exercise powers depending on quantity and purpose ensuring that acts all India reaches matched by an administrative spine ठीक है तो सो से स्ट्रक्चर टा मोर और लेस सब स्टेट रे सेम थाए ओके एंड यूनिफॉर्म एप्लीकेशन देश सारा एटा हुए तापरे इंपोर्टेंट केस लॉस देछि सुनंतु सेक्शन वाइज आपन पाखे रहिला इंपोर्टेंट केस लॉस बहुत बोलो किछि असुविधा नहीं किंतु परीक्षा रे एडा लिखि हबनी गोटे दिटा पढिले आपण जानि पारिबे ठीक अछि जोठी सब हाई कोर्ट्स लिखाई छि ताको इग्नोर कर दे ठीक अछि तो इवन ऑनगोइंग केसेस भी देछि जेमति कि एबे करेंटली ओके लास्ट एटा देखंतु ऑनगोइंग मद्रास हाई कोर्ट सुपरविजन 2024-25 केसटा ऑनगोइंग अछि एटा मद्रास हाई कोर्ट रे ठीक अछि तो एगुडा हमर दरकार नाही एते एटा कोन केस थिला आपण जानचंती शिवकाशी रे सेठी बहुत गुडे आपणकर फायर वर्क कैपिटल ऑफ इंडिया आपण कहि परिबे सेठी सब बेले दुर्घटना होता है ठीक अछि so the Madurai bench of the Madras High Court flagged systemic lapses in enforcement at Shivakasi firework unit सेटा चाली छेबे तो जोडा हाई कोर्ट्स लेखा हिची सेगुडा एते आपण को जिबार नै सुप्रीम कोर्ट केस जोटा प्रथमटा देछि अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 or 18 the court relied on explosive rules 2008 made under this act ei act under रे बहुत बड़े रूल्स हिची ओके तो से तरह 2008 रो रूल्स जोड़ा especially route 118 on suspension cancellation of licenses when regulating firecrackers to protect public health supreme court रो डिसीजन थिला आज भी अछि कि दिल्ली रे ताकर फायर क्रैकर्स बैन रहउची तापरे से गोटा ऑल इंडिया डिसीजन भी गोटे दिया हितला कि फायर क्रैकर एतिक दिन पे बैन रहबा और एई टाइम भीतर ही आपण देश सारा से टाइम भीतर ही फायर क्रैकर्स दिवाली घर कर यूज कर पारि द कोर्ट ओके declined a blanket ban but permitted only compliant that is the green crackers with time place and manner restrictions ठीक है जी ग्रीन क्रैकर्स यूज कर पारे और तापरे दिल्ली रे तो एमती भी कंडीशन आसिला जोटी ग्रीन क्रैकर्स भी बैन कर देले ओके these orders show court treating the act as a nationwide safety code right to constitutional rights हला तो ए गोटे ही इंपोर्टेंट अछि बाकी केस रा हाई कोर्ट केसेस रा
ସେଗୁଡା ଏତେ ଥରେ ଥରେ ପଢିଦେବେ ନିଜର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଓକେ, ତ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆଉ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡା ହିଁ ବେସିକାଲି ଅଛି ସ୍କୋପ କରିକା। ବଟ୍ ଆର ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ? ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆର ବଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ କଣ, discuss the scope and extent of the Explosive Act 1884. ओके, तो सेथरे से ऑल इंडिया, होल ऑफ इंडिया को से ओके तार स्कोप रे तार एक्सटेंट अछि, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू स्टडी। अच्छा, आर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट अछि कि नहीं, जेंति कि बीएनएस रे हमें पढुतलु, बीएनएस रे बे ओजेएस बैच रे चलछि, आपनकर भी वंस हमें 3 4 सारला परे मेजर क्रिमिनल लॉ जोडा पेपर 2 रे अछि, सेथरे आपनकर बीएनएस टा भी हमें पढिबा। तो बीएनएस रे हमें कोन देखुछु ना तार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन अछि, एई एक्ट रो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन अछि कि नहीं। तो आर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन एज सच नहीं, माने एटा इंडिया बाहर एटा लागू हबनी। ओके, इट कवर्स होल ऑफ इंडिया। सो नेशनल uniformity of regulation by declaring application to the whole of India, section 1 provides patchwork safety regimes. Okay, that means when read with section 5 and ER, jota rules suda, okay, 2008 explosive rules, to ER mane explosive rules hela, the act standardizes definitions, jemti ki ame dekhiba ebe section 4 re definitions suda achi amara, like authorized explosive and operational duties like separation distances, kete distance re seta blast kara habo ki use kara habo, safe storage across jurisdiction. Okay, तापर next point कौन कहला, interface with criminal law. Section 1's extent ensures that while this act regulates legitimate manufacture, possession, sale, transport, import and export, criminal misuse is prosecuted under the Explosive Substances Act 1908. So ita gote dita major difference apna dita act bithare mind re rakhibe, जेतु दीटा जाक एक्ट आपन सिलेबस रे अछि। कोर्ट्स कंसिस्टेंटली ट्रीट द टू एज कॉम्प्लीमेंटरी हैला, सेही कारण जोगु आपन सिलेबस रे दीटा जाक एका संगे रे दिया हिच। ओके, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। ठीक अछि, तो एथरे हमर एक्चुअली रूल्स नाही, तो रूल्स देइनी सिलेबस रे, तो रूल्स जोडा से 2008 रो रूल्स कहूची ताको आपन पढ़ा दरकार नहीं, किंतु जो जगह रूल्स लिखी पढ़ा पड़ो, जमती कि एठी हमें ओडिशा एक्साइज रूल्स गुड़ा अच्छी। ओके, बट सेटा मु कहली सेमिति को देखिया गली तो बहुत टाइम लगिवो, सेटा मु रिकॉर्ड करिकि दे देबी। ओके, रूल्स करिका, तो रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ। ठीक अछि, सेमति आर्म्स एक्ट जोटा हमें पढ़लो, एक्टा पढ़लु, आर्म्स रूल्स भी अछि। ठीक अछि, तो सो बट जेतु 16 टा स्टैट्यूट अछि, 150 मार्क रो पेपर, गोटे स्टैट्यूट एवरेज मार्क 10 भी आसुनी, ताहले आमे एटा माइंड रे रख परिबा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ता भितरु आसीबो। स्टिल देन वी विल नॉट लीव एनीथिंग, तो जरा देखि दबा सेटा। ओके, सेइथ पय दीटा जाक दिया हिची, बिकॉज़ दीज आर कंसीडर्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी कोटा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 हैला। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आर नाही, एटा खाली इंडिया भीतर ही एटा लागू हम। डायनामिक स्कोप थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एटा पॉइंट ता रहला, पॉइंट्स गुडा इंपोर्टेंट, खाता रे पॉइंट ही लिखियो, अपन नोट्स जदी करछे तो मन रखले पॉइंट ता मन रखिए, कांसेप्ट ता बुझिबे, तापरे अपन जहा लिखिया था लिखिबे, से जो एक्सप्लेनेशन ता घोषिया दरकार नहीं। Amendments that updated the recital to include export and subsequent rules for new material like ammonium nitrate reflect a living framework that keeps national coverage aligned with evolving hazards and trade patterns. Okay, so administrative reach through PESO, okay, the Petroleum and Explosive Safety Organization, that is the PESO. Their officers mane bhi ei chain re thanti. Functions as the national technical regulator, administering licenses, approvals and enforcement under explosive rules 2008 and allied rules.
ओके अलाइड रूल्स मान जेंति अपन देखले से अमोनियम नाइट्रेट रूल्स हला सेमिति आउरी बहुत गुड़ा अछि अमोनियम नाइट्रेट टा कोन सेटा आपन को बहुत इजीली मिली जिवो से केमिकल टा जोटा को आपको यूज करके माने सब बॉम्ब सॉन्ग्स बनौथिले ए जो सुइसाइड बॉम्ब सुइसाइड ब्लास्ट जोटा सब करथिले आगु इनिशियली से कोन करी गोटे ट्रक की गोटे गाड़ी रे पूरा आपनकर जो कोन एनी कंटेनर बड़ बड़ कंटेनर रे अमोनियम नाइट्रेट को पूरा फिल अप कर देबे ओके आउ सेगुडा कोन अमोनियम नाइट्रेट करी करे आपनकर फर्टिलाइजर्स में भी यूज हुए इंडस्ट्री पे भी यूज हुए तो सेटा मिली जाए इजीली ताकू नहीं कि तादरे आपनकर डेटोनेटर्स सरिका लगई आपण ब्लास्ट करि पारि ओके बिकॉज जो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स एंड आरडीएक्स एगुड़ा मिलवा टे कष्ट तापरे आफ्टर द बॉम्बे ब्लास्ट एंड ऑल आरडीएक्स एबे आपण जते देखुछन जो ब्लास्ट सब होउची बहुत कमी गलानी अवश्य बट स्टिल देन कश्मीर रे केबे केबे जतरा होउची आपण देखुछन कोन ना से किछि लोकल जिंस से यूज करछन आरडीएक्स यूज हेई पारुनी बेसी कना सेटा मिलिबा भारी कष्ट ओके तो जो सब अमोनियम नाइट्रेट है कि जोड़ा जिते आरडीएक्स मिलवा कष्ट हो गला प्लास्टिक एक्सप्लोसिव ओके जो सी सीरीज रो C4 C5 C12 एमती सब थाए प्लास्टिक एक्सप्लोसिव ठीक अच्छे से गुड़ा मिलवा भारी कष्ट आर्मी कंट्रोल करे से गुड़ा राइट तेणु एमान तापर बाहर कले टेररिस्ट माने केमिति आमे अमोनियम नाइट्रेट भलिया इंडस्ट्रियल केमिकल्स गुड़ा यूज करिकी ओके आमे एक्सप्लोजन करि पारि जोटा कि पॉसिबल हो सुडा हैला भी तापरे फुनी से गुड़ा भी स्ट्रिक्टली एबे रेगुलेट होची राइट सो practical illustration statistics if you are interested in statistics and all segura भी सब दिया है okay जेंति कि देखन तो recent judicial remark highlight 131 deaths and 146 serious injuries in Viruddhanagar district between 2019 and 23 prompting directions for tighter enforcement ठीक अछि तो पेशोर जहाँ करिया कथा जो हिसाब रे करिया कथा पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो सीए टिके ना एते एते आपण कहि पारे बहुत एक्सट्रीम किबा बहुत एफिशिएंसी आउ भी ताको बढ़ाया पे पड़िबो ठीक अछि तो एटी अमोनियम नाइट्रेट कोठा कहउतली सेटा से कहला राइट देन अदर कंट्रीज रे भी ताकर भी सेमती से अमोनियम नाइट्रेट एंड अदर थिंग्स ओके सेगुड़ा ता ऊपर देइची you know about this Oklahoma bombing okay and तो सेथरे आपण देखि देबे थरे गूगल रे सर्च करंतु ओक्लाहोमा बॉम्बिंग कोन सेथरे हितिला केमिति बॉम्बिंग हैला ओके तो एई अमोनियम नाइट्रेट एंड सम अदर जोटा कि फर्टिलाइजर वाला यूज हुए सेगुड़ा बहुत दिन हैला ताकू वेरियस कंट्रीज रे एक्सप्लोसिव हिसाब रे यूज होथला ओके लीगल मैक्सिम जदि अगेन नॉट रिक्वायर्ड ओके हार्डली 5-10 मार्क रो क्वेश्चन पडियो मो मैक्सिम कोन लिखिबी बट जदि आपण फर्स्ट ईयर लॉ रे अछंती कि सेकंड ईयर लॉ रे अछंती ऑब्वियसली एई स्टैट्यूट से आपण को सिलेबस रे केबे भी रहइबनी बट स्टिल इफ यू वांट टू नो देन गो थ्रू इट एगुडा वैल्यू एडिशन पे दिया अछि आपण को लीगल नॉलेज बढ़ाइबो स्ट्रिक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो दरकार नै ओके तो ईच सेक्शन पई जोटा रिलेटेड लीगल मैक्सिम जेंति हमरो सबु जको नोट्स अराउंड सेटा थाए सेटा जस्ट टू इंप्रूव योर लीगल नॉलेज आपण किंतु पढिबे थरे तो इट विल हेल्प यू समवेयर जेंति कि एथर को यूजीसी नेट रे गोटे क्वेश्चन पड़थिला जोटा कि सेही मैक्सिम ऊपर ही थिला जोटा हम नोट रे थिला बट वेरी अनकॉमन मैक्सिम गोटे स्टूडेंट ही मते पॉइंट आउट कले कि सर से मैक्सिम टा मु पढि गेथिली से तारी ऊपर ही क्वेश्चन पड़ गला राइट so if you are in that exam by FPP exam by assess darkar nahi joda darkar nahi mata skip karuch okay so summary kon tale amaro section 1 ro okay ame kai ete detail re पढुछु section 1 तो 10 सेकंड रे सरीबो okay तो सेटा बोधी छोटो एक्ट अछि तो आपण टिके डिटेल से देखि देम ता ऊपर कोन क्वेश्चन पडियो आई विल टेल यू एग्जाम रिलेटेड जहा क्वेश्चन पडिया कथा okay Citation Explosive Act 1884 and the statement that it extends to whole India should be used in licenses, pleadings and compliance documents to reflect nationwide applicability. Operators must align with
your explosive rules 2008 and material specific rules like ammonium nitrate rules 2012, because section 1's all India extent is given practical teeth through these uniform regulatory instruments. Okay, enforcement and judicial review will measure conduct against this central countrywide code. Hence, High Court and Supreme Court rulings show both strict scrutiny for safety and relief where licensed operators are improperly proceeded against. ଯେମିତି କି ସେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ରେ ଦେଇଛି ନା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଦେଇଛି कि शिवकाशी आउ से पाखापाखी डिस्ट्रिक्ट्स रे एई जो एते प्रॉपर एनफोर्समेंट न होई कि पेशर आउ तांको स्टेट गवर्नमेंट रो ऑर्गेनाइजेशंस रो सब बेले एक्सीडेंट हे कि लोकंगर डेथ होछ. ओके, कैन से स्टोर ठीक रे करू ना, लॉट ऑफ अदर इश्यूज आर देयर. ओके, सो दैट इज सेक्शन 1. नाउ कम टू सेक्शन 2. ओके, कम टू द बेयर एक्ट. तो खाली कमेंसमेंट अछि एटा. Act shall come into force on any such day as the central government, okay, by notification official gazette appoint. तो सेटा आपण ऑलरेडी देख सकछु 1st जुलाई, ओके, 1887 रे सेटा आछि. सेति की हमर दरकार एठी अवश्य बहुत डिटेल्स रे देछि, मु टिके ताको स्किप करिवे एटा. ओके, the act shall come into force on such day as the central government by notification in the official gazette appoint. Commencement was appointed for 1st July 1887. Okay. Tapare subsection 2 of section 2 was repealed by Act 12 of 1891. Okay. The purpose and effect on it, basically you know that. तार तापर हिस्ट्री देछि. तो सेते बेले एनैक्टमेंट आर हितला 26 फरवरी 1884. ओके, आउ कमेंसमेंट किंतु हैला 1887 रे 1st July, right? तार ता हिस्ट्री करिका देछि, एटा किछि हमर दरकार नै, बट इट इज इंटरेस्टिंग रीड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री एंड ऑल. एकबा सब पढी देबे, ठीक अछि. जोडा इंपोर्टेंट नै मु ताको स्किप करू छु. डॉक्ट्रिनल एनालिसिस ऑफ सेक्शन 2 खाली commencement रो डेट ता कहूची. Commencement clause affirms the presumption that legislation operates prospectively. Okay, तो ये legislation already अपन जानी चलती retrospective effect को legislation रहता है. Obviously criminal legislation रहता केबे भी हबन. Okay, generally tax matters, commercial matters रो retrospective effect रही करे. ठीक है, you know the famous Vodafone case, right? से तरह कौन retrospective effect of law इतला. Okay, जोटा भी हवा कथा नो पर सुप्रीम कोर्ट सेटा कहले कि ना एमती हवा कथा नो, बट कमर्शियल लॉ रे, मर्केंटाइल लॉ रे एंड टैक्सेशन लॉ रे मेनली आपनकर रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुए. क्रिमिनल लॉ रे हबार संभावना नहीं, बहुत ही कम नुहो ही आपण कहि पारि. आ सिविल लॉ रे किछि किछि पार्ट्स रे सेटा रेट्रोस्पेक्टिव, ओके, इंप्लीमेंटेशन तार हे परिबो. ओके, बट मोस्टली हुए. Right, so it is generally commercial law, taxation law, etc. Retrospective operation generally हुए. Right, so Indian courts repeatedly invoke the maxim lex prospicit non restricit, which means the law looks forward not backward. माने prospective implement हम retrospectively no. Okay, so एटा जो माने ओजेस में ओजेस छान एथरे भी त हमर अछि ना एसे आपण इंग्लिश पेपर रे. तो सेही थरे एमती कॉमन मैक्सिम्स आपण लिखि देले आ किछि अधिक मार्क एक्सपेक्ट कर परिबे. When deciding whether new provisions change past legal consequence. Okay, so तबरे एग्जांपल गोटे देला सुप्रीम कोर्ट इन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वाटिका टाउनशिप 2014 case reiterated that statutes are ordinarily prospective unless clear legislative intent indicates otherwise. This general principle applies when reading commencement provisions like section 2. Okay, the Tauri examples you can go through it. So how section 2 frames the act's operation? ठीक है जी, तो in the sense that तेरा commencement date ता ही अपना करो रोची. Okay, uniform starting point across India ensures explosive rules and license operate
on a common legal footing, avoiding state by state go live differences for central regulation. ହେଲା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ର ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେନା amendment କରିବେ ଅଲଗା rules ବନେଇବେ ସେଟା allowed ନାହିଁ. It's a central regulation. The explosive rules 2008 made under this act supply the operational details that becomes meaningful only because the act has duly commenced. The rules codify definitions, licensing forms, storage distances, suspension or cancellation of licenses, and enforcement architecture. ତାପରେ PESO ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି Petroleum Explosive Safety Organization. Okay. Case laws again, say same case laws प्राय अच्छी एवढा आपण can go through it. Maxims again. Okay. तर Section 3 leave it because এটা repeal ହେଇ ଯାଇଛି ଟିକେ ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ ଥିଲା ସେ repeal କରିଦେଲେ ତାକୁ ଠିକ ଅଛି. Actually it was okay repealed by the Indian Ports Act. Okay. So what was there and why it was repealed? So Section 3 was a housekeeping device common. Okay, in the 19th century drafting. So the important basically not it deleted overlapping parts of Indian Ports Act that conflicted with the new explosive code. Okay, the Indian Port Act is 1875 रे ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ହେଲା 1884 ରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ କମନାଲିଟିସ୍ ଥିଲା ଓଭରଲାପିଂ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଟାକୁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ 3 ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା ବଟ୍ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସେଟା ଆଉ କ୍ଲାଶ କିଛି ଆଉ ରହିଲାନି ତ ସେଟା ରିପିଲ୍ କରାହେଇଗଲା when parliament later overhauled ports law through Indian Ports Act 1889 the repeals were reorganized into that specific subject specific statute. Section 3 then became unnecessary and was expressly repealed by the 1889 Act. Ports law was consolidated again. Okay, so 1889 re Indian Ports Act, tapare phuni author the amendment karala 1908 re, which replaced the 1889 Act. None of these changes disturbed the Explosive Act's core regulatory scheme. They only relocated the repeal and amendments relating to ports, okay, into the port code itself. माने कसेत्र कौन थिला कि explosive आसीबो केमिति आपण ताको most of these explosives and explosive items will come through sea route. Port रे आसी लागिवो सेटा. Okay, तो सेट by section 3 टा थिला. The repeal of section 3 did not revive the portions of 1875 Ports Act that had already been deleted. A repealing clause remains spent. Revival requires a clear later enactment. Section 3 amaro, okay, say hisabre it was repealed. कौन थिला सेतरे ports related थिला कि जो सब आसीबो आपनकर explosive material storage transportation through the ports ता विषय थिला. Okay. तो एठरे जनरल क्लॉजेस एक्ट विषय भी आपनकर कहिछि बट एनीवे इट इज रिपील्ड तो हमको सेक्शन 3 ऊपर होते जिबा दरकार नाही एठी बहुत ही डिटेल्स रे एथि पई देछि बिकॉज़ इट इज पार्ट ऑफ ए लार्जर बुक ओके तो ता जरु इंपोर्टेंट जिंस गुडा चूज करिकि मो नोट हिसाब रे दे देछि बट एटा रिपील हे जे जे पई आपनको एते समय नष्ट करिवा दरकार नहीं. Now come to section 4, which is most important, definitions. Okay, each and every definition we have to go through, right? So first, bare act re dekhi deba, tapare ama material ko asiba. In this act, unless the context otherwise requires, aircraft means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than reactions of air against Earth's surface and includes balloons. है तेणु एयरक्राफ्ट रे balloons भी देखो कितने complicated definition, right? So which can derive support in the atmosphere from the reactions of the air. Aircraft टा केमती चले ता engine रे आपनकर okay air पसे ignition सेटा help करे ताको, right? So that is the thing. So बहुत ही technical definition है.
atmosphere, support in the atmosphere from reaction of the air. Okay, engine रे जो reaction टा आपनकर होची. Okay, आउ सेतरे जो balloons करिका भी थाए. Okay, से गुड़ा भी included अछि. Whether fixed or free, airship, kites, glides and flying machines. ये सबू aircraft रो definition रे जाउछन. Okay. तापरे carriage includes any carriage, wagon, cart, truck, vehicle or other means of okay conveying goods or passengers by land in whatever manner the same can be propelled. हैला तो ताकू carriage बोली कह जाउछ. और कोनोसी manner रे ताकू आपण propel करे परिबे. जेमति कि आपणकर cart गरिका कोन आपण camel cart हे पारे, bullock cart हे पारे, truck हे गला, vehicle हे गला, wagon हे गला. ठीक अछि. आगुर हम स्टेशन वैगन कहतलु राइट कि हॉर्स वैगन भी कह जेटा you know the horses they draw that so सेते से कहउची in whatever manner the same can be propelled तो सेटा घोड़ा हे पारे गोटे ox हे पारे कि गोटे you know machine भी हे पारे राइट तापरे district magistrate in relation to any area for which commissioner of police has been appointed means the commissioner of police thereof and includes any such deputy commissioner of police exercising jurisdiction over the whole or any part of such area as may be specified by state government in this behalf in relation to such area or part. तामाने कोन एटा आपनकर ओके जेंते हमर कमिश्नरेट पुलिस अछि एटी कमिश्नरेट सिस्टम तो आपन कहउछ और an additional district magistrate ADM ठीक अछि. So से जगह रे district magistrate जगह रे these you know definitions also will suffice. Okay, tapare next clause D, that is explosive. Explosive means this is very important. Eta short question ras pare dimag 5 mark. Okay, gunpowder purna kaliya hela gunpowder, nitroglycerin, nitroglycerol, gun cotton, dinitro-toluene, trinitro-toluene, जोटा TNT हमें कहूँ, okay, picric acid, dinitrophenol, trinitro-resorcinol, okay, जोटा को स्टाइफेनिक एसिड भी कहा जाए. तापरे साइक्लो ट्राइमेथिलीन ओके ट्राइनेट्रामाइन ओके देन सबु डिफरेंट तार माने कोन कोन एक्सप्लोसिव्स ओके सबुरो केमिकल कंपोजिशन से कहउची. पेंटा erythritol tetranitrate okay then tetrail nitroguanidine leadazide lead stiphenate fulminate of mercury or any metal okay diazodinitrophenol colored fires or any substances whether a single chemical compound or a mixture of substances whether solid or liquid or gaseous used to manufacture with a view to produce a practical effect by explosion or pyrotechnic effect and includes fog signals. Fog signals कोन ना अपन देखिए तो बहुत fog थिबो ओके फ्लेयर्स करिका अपन शूट करंदी ठीक अछि तो जेते जो एरिया को शूट होबो से क्लियर तपर देखा जीवो अच्छा एठी आया अछि ठीक अछि तो fog signal तक कोन तापर fireworks fuses rockets okay precaution caps detonators cartridge ammunition of all descriptions and every adaptation or preparation of an explosive as defined in this clause okay clause D रे एबे क्वेश्चन है आपन को एटा सब घोसी की मन रखिया पड़ियो ना किछि मन रखिया दरकार जनरली जिंसडा जानंतु कि एक्सप्लोसिव हैला एटा तार केमिकल कंपोजिशन उडा देछि को जिंसो को एक्सप्लोसिव कहि हबो
हाँ टीएनटी मन रख पारे पूरा नाम मन रखते खाली टीएनटी लिखदे ठीक अच्छे टीएनटी आपण लिख पारे गन कॉटन लिखिपारे एमती गन पाउडर लिखिपारे एमती दी तीन एक्सेट्रा ठीक अच्छे जे कि सिंगल केमिकल कंपाउंड हो पारे किंबा मिक्सचर हो पारे सॉलिड लिक्विड की गैस जो भी फॉर्म से थाई पारे ओके सो दैट इज योर व्हाट इज एन एक्सप्लोसिव डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव हैला क्लॉज डी रे जोटा कहूची तापर क्लॉज ई की आसन एक्सपोर्ट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस outside India by land, sea or air. Import, bringing into India from a place outside India by land, sea or air. Master. Okay, master mane kon? Na dekho to master of the ship apna कहउछन ना. So in relation to any vessel or aircraft means any person other than a pilot. Okay, harbor master, assistant harbor master or berthing master having for the time being the charge or control of such vessel or aircraft as the ease may be ताको master कहछे you know एटी जोटा other than a pilot ही नथिबो माने कोन से जे captain of the ship सीए नुहो harbor master assistant harbor master berthing master etc you know how a ship comes what a ship okay आपनकर पोर्ट को केमती आसे ship तो निजे पहुंच जीवन ना पोर्ट भीतर को शिप जेतले आसीबो शिप रो निजर क्रू अछि तार कैप्टन अछि तार नेविगेटिंग ऑफिसर थिबो रेडियो ऑफिसर थिबो तार सब यू नो रैंक्स और रेटिंग्स समस्त थिबे रैंक्स माने ऑफिसर्स रेटिंग्स माने जो माने ये तळ लेवल रे काम करछ ठीक अछि तो से रैंक्स एंड रेटिंग्स जो माने सब थिबे से शिप रो स्टाफ ठीक अछि जेतबेले गोटे पोर्ट भीतर शिप पसिबो शिप रो कैप्टन सीधा यू नो शिप को धरिकी जाइकी बर्थिंग कर दबनी से पोर्ट रो तांकर स्टाफ थिबे से माने शिप रे चढ़ीबे ओके आउ से माने शिप को स्टीयर करिकी पोर्ट भीतर पसेबे तो सी हार्बर मास्टर ही परंती और असिस्टेंट हार्बर मास्टर ही परंती बर्थिंग मास्टर ही परंती से माने सब पोर्ट रो ओके लोक पोर्ट रो स्टाफ से माने शिप रे चढ़ीबे शिप को ठीक बाटरे आनी की तांका पोर्ट रो बर्थ रे लगेबे ओके दैट इज द कांसेप्ट in relation to any boat belonging to a ship means the master of that ship okay तो बहुत जगह को बड़ बड़ शिप्स रो ताकर बोट्स भी थाए लाइफ बोट थिबो कि अलगा कोन से जिंस पे थिबो तो सेही केस रे ओके द मास्टर ऑफ द शिप इज द मास्टर ऑफ द बोट आल्सो ओके तापरे मैन्युफैक्चर in relation to an explosive includes the process of तो तारो स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चर जो स्टेजेस रो ता विषय रे कहूछ dividing the explosive into its component parts or otherwise breaking up or unmaking the explosive or making fit for use any damaged explosive hela the manufacturer re seita bi hoch okay dividing the explosive into its component parts or otherwise breaking up or unmaking the explosive taku tara components se bhangi debe किबा damage हे जे explosive ता okay making fit for use any damaged explosive ये सब manufacturing भितर जीव remaking altering or repairing the explosive तक आउ थरे बनै दउचंदी remaking okay altering किछि चेंजेस कराउची सेतर किबा सेटा खराब हे जी कोन डैमेज हे जी तो सेटा रिपेयर कराउची तो से गुडा भी आपनकर मैन्युफैक्चरिंग रे जीव okay then prescribed means prescribed by rules made under this act okay and vessel means includes any ship boat sailing vessel or other description of vessel used in navigation whether propelled by oars or otherwise okay oars कोन जो मैनुअली अपन जो बोट ता ना हिंदी रे चप्पू कोंदे देखो राइट चप्पू तो हला बहुत छोटो ओर ता राइट so oar means that wooden thing okay which you manually steer the boat okay power ता जो थरे मिले ठीक अछि अपन जदि के नेवल एनसीसी करि करे थिबे कि सेलिंग फेलिंग करथिबे अगरु ताले जानथिबे आपनकर हम जो नेवल एनसीसी रे जो बड़ बड़ बोट उडा यूज हुए वेलर बोट ताको कहै जाय तार ओर उडा माने काठ ओर उडा बहुत हेवी ठीक अछि त सेटा पानी रे पकै कि टाणला बेले तो सेमिति माने मनुष्यर वेट भी सेति कि हितिया दरकार आ से ता हाथ भी सेति कि स्ट्रांग थिबा दरकार
जो प्रथमे जो लोक माने जे पूरा पावर टा दउची ता पछरे अन्य माने थिबे कि जोटा आपण फिल्म्स रे भी देखुथांती ठीक अछि त जो केरला रे जो फेस्टिवल्स हुए सेठी केते फास्ट से माने जानती पूरा सिंक्रोनाइजेशन थाए से गुडाला ओर्स ठीक अछि से व्हीलर बोट कथा कहउतली से प्रथम जो लोकड़ा बसता है सबुठु से हेवी हेतिबा हेवी तो नुह माने स्ट्रांग हेतिबा दरकार ताकू ओके स्ट्रोक्समैन कहंती काहे ना सी ही बेसिकली पावर सेट ओके सी जदी ठीक पावर ना देला बाकी अन्य माने ताकू यू नो से बोट टा मूव करिवने बहुत हेवी बोट थाए से ठीक अछि so सेगुड़ा हला ओर्स so whether propelled by oars तमे मैनुअली ह्यूमन पावर रे प्रोपेल होची ओर्स रु रे और अदरवाइज माने मोटर लगे दिचंदी अपन मोटर बोट सेटा मोटर रे चलची okay so oars which is manual or otherwise and anything made for conveyance mainly by water of human beings or of goods and a session माने basically इधर मनीष को आपण सेतर ट्रांसपोर्ट करूचंदी किंबा एनिमल्स भी हो किंबा अलगा कोनोसी ओके आपणकर जिंस पत्र हो ओके गुड्स करिका हो so that is these are the various definitions ठीक अछि तो आम मटेरियल को आसतु this already we have finished interpretive overview okay section 4 को हमें केमिति इंटरप्रेट करिया that why it is important because सब जिंसर डेफिनेशन दउची कोनोसी भी स्टैट्यूट रे डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज ता बहुत इंपोर्टेंट काना सेथरे कांसेप्ट्स उडा सब देथिबो राइट section 4 is the gateway for regulatory reach under the act the breadth of explosive and functional inclusion firework roila detonator roila ammunition roila ensures that both civil okay pyrotechnics and industrial or military grade materials fall within the framework when used or manufactured for explosive or pyrotechnic effect the definition and harmonized with subordinate legislation rules notably the explosive rules 2008 as amended and interact with sectoral regimes like customs aviation shipping factories and environmental laws okay courts regularly read section 4 together with penal and regulatory provisions like section 5 6 6a 8 9b and with the explosive rules to determine licensing scope safety distances seizure powers का पाखरे power अच्छी seize कर दो explosive को two officer पाखरे अच्छी and culpability ठीक अछि त जदि से भूलभाल स्टोर करचंदी कि कोन सेटा culpability कार रहइबो ठीक अछि so clause wise analysis हम तो देखथिलु let us see so first हला aircraft okay जोटा clause ए रे अछि so the definition is technology neutral ता माने कोन ना मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी आपणकर काइट ग्लाइडर्स को भी मिसे दीचन ठीक अछि ग्लाइडर टा केमति ग्लाइड माने व्हाट यू मीन बाय ग्लाइडिंग विदाउट एनी मैकेनिकल पावर ओनली थ्रू द फोर्स ऑफ द विंड यू विल फ्लाई ताको ग्लाइडर को जे ठीक अछि तो सेतरे आपणकर इंजन लागि थाओ कि खाली विंड रो ओके विंड को यूज करके आपण फ्लाई करता तो जा भी हो सबुडा एयरक्राफ्ट रो डेफिनेशन में आनी so setback wala technology neutral and includes only machine okay deriving support in the atmosphere it expressly includes balloons airships kites glides and flying machines practical reach kono by its breadth it logically covers unmanned aircraft system or drones when they carry or convey explosives okay that is aerial pyrotechnic displays aerial display transport of cartridge or detonators for industrial blasting in remote sites आपण कोडे माइन रे सेठी ब्लास्ट करियार अछि very remote लोक पठे की करिया कष्ट तो ड्रोन जाउची पके दोची सेठी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करि जाउची ओके एबे रिसेंटली म्यांमार रे तार ड्रोन अटैक हला किए कला तो जणा पड़नी किंतु हमर आसाम रो चीफ मिनिस्टर ताको आडू कहि देल कि हमें कर ठीक अछि जेंति कि ना हमर ओडे थाए ओडे कोन कि लाइक भाई पांचटा लडू रे खाइतला एबे तीनटा अछि दीटा की खाइला ठीक अछि तो जेतले पचारो भाई पांचटा लडू रखा हितला तो ता भीतर जण कहूची मु खाइ ताले जणा पड़ची कि बोधे से खाइची काना से प्रथम रुटी कहूची मु खाइ राइट
तेणु गोटे स्टेट रो चीफ मिनिस्टर तांकर सेमती किसी लोकल स्टैंड भी नहीं एतरे बट सी निज आड़ू कहते ना आमे किसी जान ओके सो म्यांमार भितर उल्फा ऊपर से अटैक है कहीं एग्जांपल देली सेठी भी सेम जिनस होता ओके हजार हजार ड्रोन्स गले सबू ड्रोन रे गोटे गोटे ग्रेनेड लगी जाकि ऊपर पकई दी पड़ा ओके आउ देयर इज मैसिव डिस्ट्रक्शन तार केते कमांडर फमांडर भी मरिगले तापर पुनी मजा कथा है कौन ना फर्स्ट अटैक है तो तांकर मेन कमांडर जन दी जन से दे आर एलिमिनेटेड तांकर जेतले फ्यूनरल होतला ठीक अछि तो तांकर एतले ताको लास्ट राइट्स तांकर चलथिला तो आउ भी इंपोर्टेंट कमांडर्स माने आसिले तांको होमेज पे करिया पई सेति के बेले सेकंड अटैक टाइगर ता इधर आउ के जन चले गेले से ओके किए कला तो नो वन नोस केना जे कला से तो कहबने हम करछु राइट एनीवे सो सेगुडा से ड्रोन गरिका भी एथरे पळे आसीबो कागिना एटा टेक्नोलॉजी न्यूट्रल राइट aviation approvals are then required in addition to licenses under the acts and rules tapare carriage asila it is an inclusive definition it covers any land conveyance regardless of propulsion jara कोठी manual हे पारे लोको को धरि के अपन लोकर फोर्स से चलोचंदी if you go to Calcutta okay old Calcutta there is a Victoria Memorial पाखरे ता ना चेंज कर दिछन एबे तो सेठी अपन देखिबे जो लोक माने धरि की कार्ड चलोचन राइट आउ भोजन को इच्छा भी से बसिया पे बट तार अगेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भोजन एमती भाबंदी कि भाई से लोकटा को मु जदी बसी भी से हैरान की चलाउची सेटा ठीक इट इज अ काइंड ऑफ जेमती कि बहुत पुराना सिटीज रे ब्रह्मपुर रे कटक रे रिक्शा रो सिस्टम थिला साइकिल रिक्शा आपण बसबे जने आपण को वेट को टाणी नबो राइट सो भोजन को दिन ने सेटा लाइक यू नो इट इज माने जदि अलगा व्यवस्था अच्छी मोर मु जन कहीं हैरान करी बट अदर साइड इज दैट से ना काम पाऊनी ओके व्हाटएवर सो रिगार्डलेस ऑफ प्रपल्शन सो मैनुअल हे पारे एनिमल हे पारे मोटर लगी थाई पारे रेल रोड कार्ट हे पारे बैटरी व्हीकल्स हे पारे सब से इंक्लूडेड हे सो कंप्लायंस इफेक्ट कौन स्टोरेज इन ट्रांजिट लिमिट्स सेग्रीगेशन एंड रूट कंट्रोल्स अंडर द एक्सप्लोसिव रूल्स अप्लाई वेयर द गुड्स मूव बाय ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली or other conveyance. This prevents arguments that non-motor movements are outside the act. ठीक है तो so सबु प्रकार रो movement okay regardless of the propulsion mechanism एथरे आसी जाउ clause C district magistrate policing city adjustment जेमति कि हमर बड़ बड़ सिटी जोडा कटक भुवनेश्वर देखो अलग जगह रे भी commissionerate system हे जाउ so in commissionerate areas the commissioner of police is deemed the district magistrate deputy commissioner of police can be specifically notified additional district magistrates are included ठीक है जो जगह commissionerate area अच्छे so licensing and no objection certificate in practice NOCs and enforcement notices may be issued by these functionaries and courts have treated their actions as those of the district magistrate under the act. तापर next आसिला clause D explosive ठीक है so सेगुड़ा you know unless you are a science graduate especially chemistry वारिया रखचंदी से जो तारा से chemical ना उड़ा मन रखिया किछि दरकार नहीं ओके एतिकी लिखि देले अपन TNT RDX गन पाउडर ओके गन कॉटन एतिकी लिख दियंतु सरले एंड अदर्स तो देइची 15 20 टा सबुडा मन रखियो टीएनटी मन रखिलो सेटा सबुडा अपन जानचंदी आरडीएक्स तो टेररिस्ट माने आगु बहुत यूज करथिले सेगुडा अपन यूज करी ओके गन पाउडर टा मन रहिजो गन कॉटन टा मन रहिजो एला चारटा एंड अदर्स लिखि द ठीक है इट लिस्ट क्लासिक हाई एंड प्राइमरी एक्सप्लोसिव लाइक टीएनटी देन प्लास्टिक एक्सप्लोसिव पीएफटीएन आरडीएक्स ओके एक्सेट्रा and extends to any other substance used or manufactured for explosive or pyrotechnic effect. It then expressly includes fog signals, fireworks, fuses, rockets, okay, percussion caps, detonators. Percussion cap हो explosive ऊपर है okay एड़ा जनरली से माइंस फाइंस में यूज हुए
तो परक्यूशन माने कौन फोर्स ओके प्रेशर तो सेटा लगा तले लुचाई आप चढ़ी जी प्रेशर जो उठे देवे प्रेशर से ब्लास्ट कर बहुत गुड़े फिल्म आप देखते कि जन चढ़ीज सी कह मुझे चढ़ी जाइए कौन केमी करार व्यवस्था कहीं गोड़ा उठेले ब्लास्ट कर ठीक अच्छे डेटोनेटर्स कैट्रिजेस ammunition of all description. Legal effect कौन the list is illustrative and not exhaustive. The controlling test is functional and purpose based. Materials are covered if used or made to produce a practical explosive or pyrotechnic effect. यदि कौन टाइप रो भी explosion होची सेटा explosive under ए जाउची. Okay. Fireworks are squarely within the definition. Consumer fireworks जो आमे use करछू जोड़ा like flower pots, chuckers, okay. चकरी जोड़ा में यूज करछो अनार हरिका से बड़ा सब हैला and professional display shells alike are explosives when manufactured or used for pyrotechnic effect. Section 17 empowers extension of the definition to other substances by notification. Okay. So rules हमें गोटे तो देखिले ammonium nitrate rules सेमती gas cylinder rules भी अछि. Okay तापर examples देछि जेमती okay विरुद्धनगर और शिवकाशी रे राइट सो एंड माइनिंग एरियाज रे को जगह रे यूज होची से गुडा से आउ एक्सप्लोसिव आपण कोड यूज करिवे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव माइनिंग एरिया रे यूज होबो ब्लास्टिंग पई से आपण पहाड़ ब्लास्ट करिवे ठीक अछि तापरे ईओएफ कहउची इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट तो इंडिया बाहरु जोटा आपण नउचंती सेटा हला एक्सपोर्ट बाहरु जो इंडिया भितरु पाउचंती सेटा हला इंपोर्ट ओके तापर मास्टर क्लॉज टा कहला तेणु से वेसल पाई ओके जेतल से पोर्ट को जाउची तो पोर्ट रो जो हार्बर मास्टर थिबे कि असिस्टेंट हार्बर मास्टर ओके कि बर्थिंग ऑफिसर जे थिबे सीए ताको काम हला शिप ऊपर चढ़ीबे शिप को नै कि पोर्ट रे लगेबे ठीक अछि आउ जदी गोटे बोट अछि जोटा कि शिप रो पार्ट ताले शिप रो जी कैप्टन थिबो सीए बोट रो भी मास्टर रहइबो ओके एति जिंस से कहउतला तापरे मैन्युफैक्चर तो मैन्युफैक्चरिंग रे सब प्रकार रो जहां भी एवरीथिंग इंक्लूडेड अंडर मैन्युफैक्चरिंग से थरे हमें रखुछु देखु एक्सटेंडेड मीनिंग इट इंक्लूड्स unmaking or breaking up making fit for use damaged explosives remaking altering or repairing compliance result repacking reconditioning or repairing fireworks or detonators is also manufacturing okay a storage only license is insufficient आपण यदि केवल storage license अच्छी आपणकर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं ताले आपण मैन्युफैक्चर करि परिबेनी एक्सप्लोसिव्स से जिनसरा से कहू कि मो स्टोरेज लाइसेंस धरि कि एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करि परिबी नहीं ओके लॉ सेटा अलाउ करू राइट salvage or fitness for use operations after damage in the moisture ingress in fireworks require a manufacturing license and adherence to process safety and separation rules प्रिस्क्राइब माने ए जो पर्टिकुलर एक्ट है हमर प्लस तार जो रूल्स है 2008 रो ओके एक्सप्लोसिव रूल्स ओके तो ता अंडर रे जा कुआ आइची और दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब दैट इज द प्रिस्क्राइब रिफर्स टू दैट से थरे कोन आसुची फॉर्म्स आसुची सेपरेशन डिस्टेंस आसुची मैगजीन कंस्ट्रक्शन आसुची कंपैटिबिलिटी ट्रांसपोर्ट डिस्प्ले लाइसेंसिंग एक्सेट्रा राइट तापरे वेसल तो शिप्स बोट्स ओके जो भी मैनुअली प्रोपेल्ड हो कि आपनकर ओके प्रोपेल्ड बाय मशीन हो बाय मोटर ओके तापर तारो लैंडमार्क जजमेंट्स किछटा देछि फर्स्ट जजमेंट इंपोर्टेंट अछि मोहम्मद उस्मान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार It affirmed conviction for violations in a firework establishment, emphasizing strict adherence to licensing and safety obligations under the then Indian Explosive Act. सेतोले थिला ना इंडियन शब्दटा थिला ओके तो ता परे जेंकी सेटा हटाई ओके रिसेंट केस लॉज यू कैन गो थ्रू एते इंपोर्टेंट नहीं आ भितरु सबटु इंपोर्टेंट से एक्सप्लोसिव रो डेफिनेशन ठीक अच्छे चारिटी जिन मन रखिए आराम मन रही
TNT ओके पूरा लिखिया दरकार नहीं ट्राई नाइट्रोटोलेट ओके खाली TNT लिखि देबे RDX गन पाउडर गन कटर एंड अदर्स ठीक है अदर्स सब मोर मन रहा दरकार नहीं मन जी रखि पारे आपन यदि केमिस्ट्री थिला ग्रेजुएशन रे ताले बहुत बढ़िया ताले आपन लिखिबे जते लिखि पारे ठीक है तो तापर तार इलस्ट्रेशन करके देछि to make it more interesting you can go through it exam by important no okay not important from exam point of tapare ajiro last section ta that is section 5%. So it deals with power to make rules as to licensing of the manufacture possession use sale transport import and export of explosives okay so say license related rules guda kiye bane subsection 1 kon कहला central government may for any part of India make rules consistent with this act to regulate or prohibit except under and in accordance with conditions of license granted as provided by those rules the manufacture possession use sale of explosives or any specified class of explosive सीधा साधा भाषा रे कहले पावर टा हैला सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे it is a central law okay the explosive act 1884 is a central law तापर जो amendments आसु तार हेची पर it's a central law ठीक है जो तेरे की स्टेट रो किछि चेंजेस करिवार ताकू पावर दिया है कंप्लीटली सेंट्रल लॉ हैला सबसेक्शन 2 को कहला रूल्स अंडर दिस सेक्शन may provide for all or any of the following among other matters that is to say the authority by which license may be granted so set a central everything will be decided by central government the fees to be charged for license and other sums if any to be paid for expenses by applicants of license अपन apply करिवे explosive manufacture license by सेतले fees केते हबो अलगा केते कोन खर्च टेस्ट पई ये पई से पई सेरा सब आपण केतना देबे that will be decided by central government the manner in which applications for license must be made and the matters to be specified in such application what will be the format of the application setare kon lekha habo kon documents attach kara habo everything will be decided by the central government the form in which and the conditions and subject to which these license must be granted tenu se license pai form ta jota ठीक अछि तापरे लाइसेंस ता को कंडीशन रे आपन को ग्रांट हो ता माने कोन ना जदि आपन से कंडीशन वायलेट करले आपन को लाइसेंस सस्पेंड भी हे पारे आउ कैंसिल भी हे पारे ठीक अछि तापरे क्लॉज ई the period for which license have to remain in force तो केते वर्ष पे रहबो गोटे स्टैंडर्ड तार 4 वर्ष 5 वर्ष जा भी थिबो which will see ओके किंबा लॉन्ग टर्म पे रहबो किंबा शॉर्ट टर्म पे रहबो तारी अंडर रे ओके सब क्लॉज ई the authority to which appeals may be preferred under section 6F the proceedings to be followed by such authority and period within which appeals shall be preferred the fees to be paid in respect of such appeals and circumstances under which such fee may be refunded okay ता माने कोन ना बेसिकली जदि आपनकर किछि फाइन गरिका करा हला ताको आपण अपील करिवे किछि ऑर्डर को ता पई प्रोसेस कोन केते फीस देबे ओके रिफंड केमती होबो all those things EEA the total quantity of explosives that a licensee can purchase in a given period of time ठीक है so केते क्वांटिटी रो एक्सप्लोसिव आपण परचेस कर परिवे मैन्युफैक्चरिंग पे ओके EEB the fees to be charged by the chief controller of explosives or any officer authorized by him in this behalf for services rendered in connection with manufacture transport import or export of explosives so केते जदि किछि चार्जेस किछि ओके जा भी त नबा कथा तो सेटा fees to be charged ठीक अछि सेटा डिसाइड करिवे किए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स और सी जदि का को डेप्यूट करथिबे से ऑफिसर the exemptions absolute or subject to conditions of any explosives or any person or class of persons from the operations of this rule okay तेणु जदि किछि exemption दिया हबो ओके ताले कहा को exemption दिया हबो को कंडीशन रे exemption दिया हबो सेटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करिवे
एटा हला सेक्शन 5 तापरे अमेंडमेंट रे सेक्शन 5A टा भी ऐड हेची persons already in business in respect of certain explosives to carry on such business without license for certain period तेणु already कोनोसी explosive business रे जण जदी अछि ओके ताहले किछि समय तो ग्रेस पीरियड दियाबो से लाइसेंस अप्लाई करी विदाउट लाइसेंस भी से काम करि परिबो notwithstanding anything in section 5 or in rules made thereunder okay immediately before the commencement of Indian Explosive Amendment Act 1978 any person was carrying on the business of manufacture sale transport import or export of any explosive for which no license was required under this act before its amendment by the Indian Explosive Amendment Act 1978 माने सेतले लाइसेंस रिक्वायरमेंट नथिला then such person shall be entitled to continue to carry on such business without license in respect of such explosive for a period of 3 months from the date of such commencement हैला तेणु 3 मास भीतर अप्लाई करिकि ताको लाइसेंस आनिया पड़ियो 3 मास पर्यंत से कंटिन्यू कर परियो काहेकि ना एही अमेंडमेंट 78 अमेंडमेंट आगुरु एही लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एक्सप्लोसिव्स पे नथिला it before the expiry of the said period of 3 months such person has made an application for grant of license under this act for such business in such explosive until the final disposal of the application whichever is later ठीक है so 3 मास ताकू अलाउ कराई परिबो जदि से अप्लाई कर देछि ताले तार एप्लीकेशन टा एक्सेप्ट होछि कि रिजेक्ट होछि कि फाइनल डिसीजन हला पर्यंत से कैरी करबो ओके विदाउट ए लाइसेंस ही कैन मैन्युफैक्चर or sale or transport or import or export any explosive okay so this is section 5 and 5A ता माने आ गोटे कथा कोन जानले 1978 अमेंडमेंट आगुरु आपनकर लाइसेंसिंग रो रिक्वायरमेंट नथिला ठीक अछि so now come to section 5 am material को असंतु what section 5 empowers it enables the comprehensive subordinate legislation for licensing and control across the entire life cycle of explosive manufacturing possession use sale transport import and export it permits regulation and even prohibition except under license so long as the rule is consistent with the act and pursues the statutes safety objectives okay it allows detailed procedural architecture that is application form condition validity proofs renewal suspension cancellation purchase caps माने केतेटा ओके केते क्वांटिटी रो एक्सप्लोसिव से परचेस कर परिबो मैन्युफैक्चरिंग पे ओके fees for technical services by chief controller of explosives and exemptions for specific person or classes it creates a statutory right of appeal by requiring rules on the appellate forum timelines procedure and appeal fees and refund scenarios linking directly to section 6F it recognizes transitional fairness through section 5A by allowing already operating businesses a short window to continue without a license while they apply under the new regime okay 3 मास टाइम दियाउतला किंतु 3 मास जदि अप्लाई कर दैछन्ती ताले एप्लीकेशन डिस्पोज होला पर्यंत इधर लाइसेंस मिलिबो कि सेडा रिजेक्ट हेजो से पर्यंत ठीक अछि तो तारो तापरे डिटेल तारो स्ट्रक्चर ता देछि you can go through it how it works and all important landmark cases रे प्रथमटा important अछि in reference Delhi Law Act 1951 Supreme Court okay presidential reference eta hitla RE mane reference presidential reference it upheld the constitutionality of delegated legislation while forbidding delegation of essential legislative functions this is the foundational authority for rule making powers like section 5 Eta important substantive themes courts apply to section 5 rule making so safety first interpretation where a construction choice exists readings that protect life and property prevail over readings that dilute precautions purpose and effect test definition and controls are understood functionally if a material or activity produces an explosive or pyrotechnic effect
the licensing code applies. ता माने ता manufacture की ता use की ता storage की ता import export transport करिया पे आपण पाखे explosive license थिबा दरकार. Non derogable minimum ता माने कोन ना जो separation distances हला आपण जे blast करिवे मनिष ताटू केते दूर थिबो maximum quantities compatibility rules operator qualifications are treated as safety minimum. Minimum माने कोन minimum. Okay, non derogable माने से गुडा को आपण काटी परिबेनी minimum से तो करया पे ही पड़िबो. Commercial inconvenience is not a defense. Okay, then structured discretion. So licensing authorities must record reasons while granting exemptions, imposing conditions, suspending or cancelling their discretion. Okay, their discretion is reviewable for arbitrariness and proportionality. तो से जहाँ इच्छा कर पारे arbitrary decision नहीं परिबेनी जदि सेमती नेले ताले सेटा कोर्ट रिव्यू कर परिबो तब. Okay, illustrations करिका देछि, you can go through it. Maxims also not that important. Okay, so that is section 5. Right. So हमें short answer लिखिबा. Okay, 2 marks रा or 2 marks नहीं 5 marks रो दिटा question हमें लिखिबा. So take down the questions. अच्छा first गुरु take 10 minutes. हला doubts जा अछि बाहर करंतु section 1 to 5. Any doubts you have to take 10 minutes. Okay, generally doubt जदि कोतरे होछि ना ताले मु पढेला बेली पचार देबे कि जसया ना अल्टरनेटिव. Otherwise you see whatever doubts you have. I am giving you the 2 questions. Answer कोन होबो से अभी कहि दोछि ताको अपन लिखि पठेबे. Okay, 5 मिनिट रो दीटा simple question और निजे अपन निजे करबे. तो question 1 टा लिखतो. Discuss the primary difference between Explosive Act 1884. Discuss the primary difference between Explosive Act 1884 and Explosive Substance Act 1908. Discuss the primary difference between Explosive Act 1884 and Explosive Substances Act 1908. Hello. 5 marks कौन लिखा हुआ? ये Explosive Act 1884 is basically a regulatory act. It regulates the manufacturing, okay, तापरे storage, transport, import, export, etc. of explosives. Regulation data. Explosive Substances Act, on the other hand, primarily deals with criminal misuse of explosive substances. Hela, the criminal misuse जदि सेटा करा होछ. Explosive टा आपण लोकन को मारिया पे यूज करते अलगा सब भूलभाल जिंस पे यूज करते. So explosive substance एटा हला फंडामेंटल. तो एटा गोटे की 2 पॉइंट लिखिबार अछि. 2 marks आपण नै परि. Okay, 2 marks will be. तापरे next question. Define an explosive. Define an explosive. Continue. Same question. 5 mark question. So just खाली explosive रो definition टा देबे. निजे जा बुझिले आउ चारिटी explosive रो ना लिखिबे. आपण सबु ना लिख परियो भलो. कोन लिखिबे? गोटे हला gun powder, gun cotton. Okay, TNT, RDX, etc. ठीक अछि. Continue. Same question रे. Discuss the extent and applicability of the Explosive Act 1884. Discuss the extent and applicability of Explosive Act 1884. 5 mark question एटा. So no conclusion, no introduction. सीधा जा पचराला सेतिक लेखा हो गाना 5 मिनिट रे सरीवर अछि. 5 मिनिट क्वेश्चन माने 5 मिनिट. ओके, 5 मार्क क्वेश्चन माने 5 मिनिट. और सेटा 2 मार्क क्वेश्चन माने 2 मिनिट माने 2 लाइन लेखा हो. तो टोटल 10 मिनिट रो अधिक नबा कथा न. ओके, नाउ इट इज 10:07. ठीक अछि. तो 10:17 10:17 18 से हिसाब रे ताको तर व्हाटएवर यू हैव रिटन सेंड इट टू मी. ओके, गोटे पेज की 2 पेज हेतिबो तो फोटो पठे देबे. नो द नंबर 9437002210.
ठीक अछि तापर मु डिस्कस कर देबी कार कोन आंसर चेंज करिवार अछि कि कोन लिखिला कोन कला ठीक अछि इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी एथरे किछि डाउट्स तो नाही ए दुटा क्वेश्चन रे कहि भी देली आंसर ठीक अछि प्रथमटा तो जस्ट खाली लिखिबे कि एटा रेगुलेटरी एक्ट एटा हला तार ओके क्रिमिनल मिसयूज पई तार प्रोविजंस अछि हला सेटा है सेति कि लिखिबार अछि दी सेंटेंस कि गोटे सेंटेंस नेक्स्ट टा दी पार्ट अछि क्वेश्चन 2 सेटा 5 मार्क पे सेटा भी किछि नो इंट्रोडक्शन नो कंक्लूजन तू पूरा टू दी पॉइंट लिखिबे कोन ना प्रथमे पचरा हला स्कोप ऑफ एक्सटेंड कोन तो लिखिदेबे आपण स्कोप ऑफ एक्सटेंड तर सेटा हला इंडिया भीतर टेरिटोरियल तार ये ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ठीक अछि तो सेटा हला कथा तापरे नेक्स्ट पार्ट रे that you have to write what is a explosive so as per section 4 clause etiki explosive is defined as it air okay ସେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିବାର ଅଛି that's it basically okay तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग डायग्राम कोथरे भी करियो 2 मार्क 5 मार्क पे कोन डायग्राम करियो डायग्राम हला 15 मार्क कि 10 हमर 15 मार्क क्वेश्चन बेसी पडियोन परीक्षा रे 10 मार्क रु अबव ओके एपीपी रे 10 मार्क रु अबव क्वेश्चन रे फोटो डायग्राम कर पारियो बड़ क्वेश्चन जदी पडला 15 मार्क 20 मार्क प्राय पडियार संभावना कम किंतु जदी पडला ताले कर पारियो ओजेएस रे 15 मार्क्स 10 15 मार्क्स ऊपर सेम 25 मार्कर भी आछि सेथरे डायग्राम दरकार 25 मार्कर रे दीटा डायग्राम दरकार तो डायग्राम केमती कोन कराबो ऑलरेडी मु तार क्लास नै जेछि ओके ऐप रे भी अछि जो माने नुआ अछंती देखि नांती सेटा देखि देबे हाउ टू ऐड डायग्राम्स ओके सेटा बहुत इंपोर्टेंट वैल्यू एडिशन पे ओके प्लीज स्टार्ट राइटिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अदरवाइज यू स्टार्ट राइटिंग आंसर जार सरला व्हाट्सएप करन
yes, I think you have finished. Okay, already time up हे गलानी. तो जो मैंने पठे चंती मु देखि दउची जस्ट कल तंगरा रश्मिता आपणकर अपन जो फोटोटा उठी चन ना द फ्लैश बहुत बेसी हे जेजी पूरा क्लियरली देखा जन बट एनीवे ठीक अछि आपणकर पॉइंट्स रे अच्छा तरे कोन चेंज करि होबो फर्स्ट क्वेश्चन टा और सेकंड क्वेश्चन टा फर्स्ट क्वेश्चन टा 2 मार्क को थिला सेकंड क्वेश्चन टा 5 मार्क को थिला ठीक अछि अच्छा एथरे आउ कोन चेंज करि पारे ठीक अछि कंटेंट इज करेक्ट बट सेतरे पॉइंट्स रे लिखिबे और अंडरलाइन करिवे ठीक अछि तो अंडरलाइनिंग टा मिसिंग अछि हमर इंपोर्टेंट जो गुडा आपनकर ये अछि फ्रेजेस अछि से गुडा आपण अंडरलाइन करिवे ठीक अछि अदरवाइज कंटेंट इज फाइन आउ कोन चेंज करि हबो हेडिंग सब हेडिंग देकी लिखिबे आउ टिके बेटर मार्क्स आसीबो ठीक अछि हां सेतिकी खाली टिके अदरवाइज रेस्ट थिंग्स आर ओके अच्छा आउ गोटे जिनस भी एटा समस्त को मैं कहूची हमर जो ओपीएससी रो जो पेपर अछि मु थोरे ग्रुप रे देइथिली ओके आ थोरे चैनल रे भी दे देबी सेईटा समस्त सेई थरे लिखंतु ठीक अछि तो समस्त सेई थरे लिखंतु माने कोन आपनकर जो रूल्ड पेपर रे लिखंतु हेला अभ्यासटा करंतु काहे अंडरलाइनिंग करिका प्लेन पेपर रे तो सहज रे हिजबो किंतु ओपीएससी तो हमको रूल्ड पेपर दबो तो आपन से थरे लिखियार अछि अंडरलाइन करिवार अछि हेला सेटा फर्स्ट टू टिके देखि ओके रश्मिता तो नेक्स्ट टाइम अपन हां सेही पार्ट टा खाली नेक्स्ट टाइम देखि देबे अदरवाइज कंटेंट इज फाइन किंतु आपण पैराग्राफ फॉर्म रे लिखचंती ना सेटा टिके आपण चेंज करिया पे पड़ियो ठीक अछि से थरे कोन बना एते ना मार्क्स हमें एक्सपेक्ट कर परिबे ओके तापरे नेक्स्ट हला अभिक्षा क्वेश्चन 1 टा पूरा ठीक अछि 2 मार्क्स पई सेति के लेंथ आपनकर ठीक अछि ओके ताको देखंतु कोठी इंपोर्टेंट फ्रेज अछि सेटा अंडरलाइन कर दे परिबे सेकंड क्वेश्चन टा आपण को कंटेंट कम हे गला काना एटा दी फर्स्ट क्वेश्चन टा 2 मार्क रो थिला सेकंड क्वेश्चन टा 5 मार्क रो थिला 5 मार्क क्वेश्चन रे आउट के हमको ऐड करिवार थिला ओके एक्सप्लोसिव्स आपण मींस दैट लिखचंदी मींस नहीं एक्सप्लोसिव्स इंक्लूड ठीक अछि सेटा आपण लिखिवार अछि आ तार जो प्रोसेस टा से कहिछि ठीक अछि तो देखंतु एठी को पार्ट रे सेटा एक्सप्लोसिव कोन से तो कहूछि ता छोड़ा मेन जिंस से जोटा कहला एक्सप्लोसिव रो दैट इज बेसिकली कि तो एथरे हमें दबा ना एक्सप्लोसिव इंक्लूड्स और मींस गन पाउडर चारटा कहली पूरा तो सब मन रखिबन जे जतटा मन रख पारला ओके किंतु एई पॉइंट्स रा लिखिया पड़िबो तापर नेक्स्ट राइट सिंगल केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस तापर पुनी नेक्स्ट ओके सेटा पॉइंट से लिखिना सुविधा सॉलिड लिक्विड और गैसियस ठीक अछि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट टा डेफिनेशन रहला used or manufactured with a view to produce a practical effect by explosion or pyrotechnic effect एई दीटा जहाँ भी हेले टर्म रहिबो explosion or pyrotechnic effect ओके तापर पुनी नेक्स्ट पॉइंट अपन दे पर आल्सो इंक्लूड्स फॉग सिग्नल्स फायरवर्क्स एक्सफ्यूजेस डेटोनेटर्स जति मन पड़ कुछ भी रहता तो अभी सेटा अपन टिके चेंज करिवे क्वेश्चन 2 रे क्वेश्चन 1 ठीक अछि ओके तापर शुभश्री आज्ञा सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार शुभश्री आपनकर
ठीक अछि आपणकर स्ट्रक्चर टा भी ठीक अछि आपणकर कंटेंट टा भी ठीक अछि ओके पॉइंट्स लिखचंती जोठी दरकार अंडरलाइन करचंती फाइन ठीक अछि सेकंड क्वेश्चन टा भी ठीक अछि आपण पॉइंट्स रे लिखिचंती चारोटी पॉइंट 5 मार्क क्वेश्चन पे फाइन हमको एक्चुअली एई टाइप रो लिखिबार अछि के देखो पॉइंट वाइज करी कि लिखिबे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन टा 2 मार्क रो थिला तेनु सेटा गोटे की 2 पॉइंट लिखिबार अछि दैट इज फाइन सेटा आपण लिखचंती ठीक अछि गुड बाकी जो मैंने लिखिचंती यू कैन राइट एंड सेंड ठीक अछि तो मु ताको देखिबी और जार जदि भूल थी किछि इफ यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग देन आई विल गिव यू द फीडबैक आपण ठीक ठाक लिखुचंती ताले ठीक अछि ताले कि असुविधा नहीं बट आपण किछि इंप्रूवमेंट करी हबो आई विल टेल यू व्हाट टू डू दैट ओके सो यू कैन राइट एंड सेंड इट तो एटा गला आपणकर 1 to 5 ओके तो काली हमें 6 to 10 ओके देख 6 to 10 एक्चुअली बेसी बड़ बड़ छोटो ही अछि जरा सेमिति भी 18टा सेक्शन ही अछि ओके दे 3टा की 4टा क्लास रे आपण कंप्लीट हे छै ठीक अछि लाइसेंसिंग ऊपर अछि 6 टा तो 6 टा टिके प्रॉपर्ली देखाबो सो विल ट्राई टू कंप्लीट 6 to 10 टुमारो ओके आउ ए जो पीडीएफ टा आफ्टर द क्लास ओके मु सेटा अपलोड कर देबी आपण 15 मिनिट्स पर सेटा एक्सेस कर दे परिबे ठीक अछि तो आपण देखिबे एबे गोटे नुवा फोल्डर टे क्रिएट हेछि जेतु आगुरु कोन थिला ना से बीएनएस रो आ बीएसए रो से गोडा सब से वीडियो लेक्चर फोल्डर रे ही पीडीएफ नोट्स उडा थिला एबे तार गोटे अलगा ओके फोल्डर कराई जोटा मु ग्रुप रे देइतिली स्टडी नोट्स करिके ओके तो सेही थरे जहा जहा नोट्स भी हमर अछि जोटा अलग अलग जगह रे अछि सब से गोटे जगह रे मु रखि देबी ताले आपण से गोटे फोल्डर रु सबुडा पाइ जिवे तो एई नोट टा आपण से स्टडी नोट्स अंडर रे जिवे सेथरे मेंस थिबो पेपर 3 थिबो पेपर 3 को जिवे तो सेथरे आपणकर आसीबो एटा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 ता अंडर रे थिबो सेक्शन 1 to 5 ओके सो आफ्टर द क्लास आई विल गिव ठीक अछि तो जो मान लेखि नांती टिके लेखिकी पढांतु आपणकर टिके ना छोटो छोटो आंसर लेखिया प्रैक्टिस करिया पड़ियो हमें तो स्कीम टा जानी नो माने कोन केमती पकेबे बट नॉर्मली ओएसजेएस रे जेमती पढुची आपणकर 2 मार्क्स 5 मार्क्स जाई जाई कि 10 मार्क्स मैक्सिमम सेटा हमको प्रैक्टिस करिया पे पड़ियो 25 मार्क क्वेश्चन ओजेएस वाली आईटी पढियाटा टिके मते डिफिकल्ट लागुच ओके फाइन सो विल स्टॉप हियर देन we'll meet tomorrow so namaskar all of you नमस्कार सर।